Welcome to my channel guys. This is your friend Lakshman and today we are going to learn some words. So in this channel you will always find some new and attractive words, so you can use those words in your conversation and make your conversation very attractive. So without wasting time, let's start. Today's first word is imply, which means to communicate an idea or feeling without saying it directly. यानी कि किसी भी चीज़ को डायरेक्ट बताने की बजाय इशारे में बताना या इशारे में समझाना. If we take some example, then first is silence of Lord Vishnu implied that demon had been killed. यानी कि भगवान विष्णु के चुप्पी ने यह बता दिया था कि राक्षस मारा गया है. If we take second example, then you implied that you were a doctor. यानी कि आप यह बताना चाहते थे कि आप डॉक्टर थे. Next word, deprive, which means to prevent from, जिसे हिंदी में कहेंगे वंचित रखना, किसी को भी किसी वस्तु से वंचित रखना. If you go with the examples, then first example would be, we citizens of the state are deprived of even a basic human rights. यानी कि हम उस राज्य के नागरिक हैं जो अपने बेसिक ह्यूमन राइट्स यानी कि बेसिक अधिकारों से भी वंचित है. If you go with the second example, then deprived sections of our society don't get even 2 times square meal. यानी कि हमारी सोसाइटी का जो वंचित रखा हुआ भाग है उसे 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता. Next word is reveal, which means to open a secret. यानी कि किसी की राज की बात किसी को बता देना. फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड रिवेल्ड ऑल माई सीक्रेट्स इन फ्रंट ऑफ माई पेरेंट्स. यानी कि मेरे दोस्त ने मेरे सारे राज मेरे पेरेंट्स के सामने बता दी है. सेकंड एग्जाम्पल वुड बी दिस, थीफ रिवील्ड दैट हाउ मच गोल्ड ही हैज स्टोलन. यानी कि चोर ने बता दिया कि उसने कितना सोना चुराया था. Our next word is unique, which means outstanding or an extraordinary. The meaning of unique word in Hindi would be this, anokha ya lajawab. The example would be this, every person has their own uniqueness, which means दर एक इंसान की अपनी विशिष्टता होती है. Our second example would be this, the Taj Mahal is a unique creation of architecture. यानी कि ताजमहल वह वास्तुकला का एक अनूठी या फिर अनोखा रचना है. A next word is absurd, which means a stupid or a ridiculous. In Hindi, the absurd means मूर्खतापूर्ण. If you go with the examples, then an example would be this, to believe in luck is a absurd things. यानी कि नसीब पे भरोसा करना वह एक मूर्खतापूर्ण चीज़ होगी. Our second example would be this, what an absurd idea, which means यह कितना मूर्खतापूर्ण विचार है. Our next word is zeal, which means earnest enthusiasms. In Hindi, उत्साह. If you go with some examples, now first example would be this, Kohli is a zeal cricket player, which means कोहली एक उत्साही क्रिकेट प्लेयर है. Our next example would be this, real education is one which is obtained with zeal. यानी कि वास्तविक शिक्षा वही है जो उत्साह के साथ मिलती है. Our next word is vow, which means to swear strongly. The vow means in Hindi कड़ी प्रतिज्ञा करना. If you go with some examples, then we can use this word in the sentence like, she vowed to never speak lie. यानी कि उसने झूठ नहीं बोलने की कड़ी प्रतिज्ञा की. Our second example would be this, the victim vowed revenge. यानी कि पीड़ित ने बदला लेने की कड़ी प्रतिज्ञा की. If you like this video, then don't forget to like, share and subscribe. Thanks for watching guys.